Next concept we come to is history of economics. Uh, तुमको फर्स्ट चैप्टर जो इकोनॉमिक्स का है विच विल बी स्टार्टिंग टुमारो, उसमें देयर इज सम एलिमेंट ऑफ दिस. सो यहाँ पे जस्ट अ बेसिक पार्ट ओनली वी विल से इकोनॉमिक्स इज नॉट, बोलते ना, not very old. It is just around 200 to 250 years, I must say. 250 years is the right time to say. Previously, economics was not a separate subject. In fact, if you go back to 1770s, उस समय economics तो नाम था भी नहीं. That time they used to use the word political economy. So जो history of economics है can be divided into various time frames. Each time frame developed economics as per the time frame in which that developed economics. So what I have done, you will not find this anywhere. What I have done is I have divided this into 5 parts. First part was the political economy. Then ये मिल जाएगा तुमको टेक्स्ट बुक में, वेल्थ ओरिएंटेड. Then scarcity oriented, and the last one is growth oriented. Now, first of all, let us understand कि if you go to the history of economics, it was previously called as political economy, and it was not taught, you can say, as a separate subject. उसमें you can say social या sociology जैसे सब्जेक्ट का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, you can say. So political economy में it was more of the जो कंट्रीज है एक दूसरे के साथ जो व्यापार करते थे उस पे ये डेफिनेशन बैठा पॉलिटिकल इकोनॉमी. सो फर्स्ट फेज वाज वेरी सिंपल. जो है ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इनफैक्ट इफ आई गो बैक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, कौटिल्य, जिसको हैव यू हर्ड ऑफ चाणक्य? हैव यू हर्ड ऑफ चाणक्य? चाणक्य का नाम सुना है तुम लोगों ने? यस सर. नाउ कौटिल्य चाणक्य नॉट 1909 में नहीं होगा, ये काफी पुराना है. सो he developed this concept of political economy. It's not 1909, it is thousands of years back. But what I mean to tell you is, he wrote this book called as Arthashastra. इस book में Chanakya said, because during that time there were kings and rulers, correct? India was divided into kingdoms. Kingdom में राजा थे. तो please understand that he said कि एक राजा को प्रजा से टैक्स लेना चाहिए, और उस टैक्स ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए. And from that tax he must run his kingdom, but it must be justified. To poor people tax must be less, to the rich tax must be more. So his Arthashastra was more of how the king must run his kingdom by collecting कर, उस समय टैक्स को कर बोलते थे, and how it must be utilized. Now wealth oriented definition was somewhere around 17. एडम स्मिथ का तो जन्म 1723 हुआ, he died 1790. So you can safely assume this is between 1720s and 1770s and 1780s. Now wealth oriented definition में actually Adam Smith
जो है, why is he why have I written 1776? Because this was the year in which the first ever textbook of economics, which is now known as The Wealth of Nation, was published. चाणक्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, उसको वर्ल्ड क्रेडिट नहीं देता एज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स. वर्ल्ड गिव्स क्रेडिट टू एडम स्मिथ, 1776. एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन था इकोनॉमिक्स का, वेल्थ का, सिंपल सा लॉजिक ले लो. टेल मी, इंडिया इज नंबर वन इन व्हाट? शुगर केन में अपन नंबर वन है, बनानास में नंबर वन है, बफेलोस गाय भैंसे वर्ल्ड के 58% गाय भैंस इंडिया में है, शक्कर टी में अपन सेकंड है, और इंडिया प्रोड्यूसेस 40 crore liters of milk in a day. So we are number one in milk production in a day. But we don't have petrol. क्रूड ऑयल हम गल्फ कंट्री से मंगाते हैं, हमारे देश में बहुत कम निकलता है. सो वी हैव टू इंपोर्ट पेट्रोल, दैट इज क्रूड ऑयल. सो व्हाट एडम स्मिथ सेड कि अ कंट्री शुड एक्सपोर्ट द गुड्स और उससे अपना वेल्थ बनाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के पास लेट अस एज्यूम वेल्थ है 100 crores. What India must do is to produce bananas में इंडिया नंबर वन है, शुगर केन में इंडिया नंबर वन है. So India should export these and earn foreign exchange from this and use it to increase our wealth. इसका बेस्ट एग्जांपल वर्ल्ड का है चाइना. चाइना पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन सबसे सस्ता चाइना ने बना के पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट किया, and China has become very rich. Does everybody agree that China has become very rich due to lots of exports by selling cheap and low quality products? सब मानेंगे, राइट? तो चाइना ने एडम स्मिथ का डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से यूज किया एक्सपोर्ट करके, क्योंकि इफ अ कंट्री हैज 100 crores, कंट्री के भीतर ही गुड्स बिक रहा है, तो 100 crores कभी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि देश के भीतर ही गुड्स बन रहा है, देश के भीतर ही बेचा जा रहा है. So according to Adam Smith, you can become wealthy by exporting the goods to other country which has a shortfall, या वो जिसमें नहीं है. लॉजिक समझ में आया सबको? ये सब नो? Yes. So that was a definition of given by एडम स्मिथ, which is called as a wealth oriented. उस समय इकोनॉमिक्स को वेल्थ से तोला जाता था. But then see, for every economist who will suggest something, there will be criticism. Then welfare oriented definition entered, जिसमें अल्फ्रेड मार्शल था. What Alfred Marshall said, again Alfred Marshall का जो एरा था, वो somewhere he was born 1842, died 1924. He wrote a book 1890 में, बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. और इस फेज में वेलफेयर ओरिएंटेड में पॉलिटिकल इकोनॉमी, और ये जो यहाँ पे भी पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे, बट यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाज स्टार्टेड टू बी टॉट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट. ये फिर 1890 के बाद इसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स शुरू किया या उसमें सिखाया 1902 में. सिंस देन इकोनॉमिक्स इज टॉट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट. नाउ व्हाट अल्फ्रेड मार्शल डिड, उसने एडम स्मिथ का डेफिनेशन को कैंसिल नहीं किया, क्योंकि व्हाट इकोनॉमिस्ट टेंड टू डू, वो दूसरे का डेफिनेशन को बुराई करते हैं और खुद का डेफिनेशन लाते हैं. एडम स्मिथ का नाम मार्शल ने खराब नहीं किया. व्हाट मार्शल सेड कि इकोनॉमिक्स के दो पहलू हैं, कॉइन के दो पहलू होते हैं. जैसे एक पहलू में वेल्थ है और दूसरे पहलू में लोगों का वेलफेयर है. सो ऑन द वन साइड इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ, ऑन द अदर साइड इट इज अबाउट द वेलफेयर. सो यहाँ पे उन्होंने वेलफेयर की बात की कि इकोनॉमिक्स इज अबाउट ह्यूमन वेलफेयर. ये तीनों प्रोग्रेस होता गया. दिस वाज मोर ऑफ अ टैक्स कलेक्शन एंड उसका एक्सपेंडिचर, इसका वेल्थ ओरिएंटेड था, यहाँ पे वेलफेयर डेफिनेशन. बट द अल्टीमेट डेफिनेशन जो दिया गया, जो आज भी स्वीकारा जाता है, एवरीबडी एग्रीज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज दिस scarcity oriented definition given by Lionel Robbins in the year 1931. Some books say 1932, you can say 1931, 1932, right? अलग अलग इसका टाइम फ्रेम पे आता है डेफिनेशन. Lionel Robbins said कि what exactly is economics? He said human beings have wants, तुम्हारे इच्छा है, but money is limited, that is resources. You want an ice cream 100 रुपए का, but you have only 50 rupees. He said how man
tries to get what he wants with limited funds. मतलब कि तुम्हारा पगार 10,000 रुपया है, उस 10,000 रुपए में तुम घर कैसे चलाओगे? तुम्हारी इच्छा तो 50,000 रुपए की है, पर तुम्हारे पास पैसा लिमिटेड है. So this is how Lionel Robbins defined economics. He said bonds are unlimited. To satisfy the bond, you require means, that is money, resources, that is limited. So how you manage this unlimited wants which a human has, but limited funds which he has, कैसे वो balance करता है? He said by prioritizing. For example, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, you want to see a movie, but you are very hungry. So what you will do? First is you will eat something, and if money remains, then you will go to the movie. So तुमने priority पे खाने को रखा. तो दिस इज व्हाट ही सेड कि पीपल देन प्रायोरिटाइज, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे पैसा जितना लिमिटेड है वो पूरा करो और बाकी का छोड़ दो. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी शॉप्स 4 बजे तक खुले रहते हैं, पहले तो 7 से 11 थे. would you would have, would you have gone to the furniture showroom? The answer is no. तुम पहले किराना लोगे, भाजी लोगे, बाद में सब होने के बाद फर्नीचर लोगे. फर्नीचर लेके थोड़ी पेट भरेगा. So this is how he said कि wants are unlimited and you will try to fulfill that want which is highest in your scale. तो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड, बाद में लेस इंपॉर्टेंट बॉन्ड, इस प्रकार से. इसलिए देखो फर्नीचर का सेल थोड़ा कम हुआ रहेगा, कपड़ों का सेल कम हुआ रहेगा. सेल किसका ज्यादा हुआ? सैनिटाइजर्स, मेडिकल मेडिसिन, तुम्हारा किराना शॉप, सब्जियां, ये सब का सेल रहा है. करेक्ट. सो दिस इज हाउ वी सेड स्कैरसिटी मतलब कमी. वांट्स बहुत है बट इच्छा पूरा करने के लिए पैसे कम है. नेक्स्ट इज ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन. व्हाट ही सेड, ये जो लास्ट डेफिनेशन है पॉल सैमुअलसन ने दिया है, सिंपल सा है. ही सेड कि इकोनॉमिक्स इज अबाउट ग्रोथ. ही सेड कि ऑन बोलते हैं ना कि देश का जो प्रगति होता है उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं. उस इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हेल्थ केयर अच्छा होता है, एजुकेशन अच्छा होता है, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं. सो पॉल सैमुअल, ये मॉडर्न डेफिनेशन है. दिस इज अ मॉडर्न डेफिनेशन. इनको ये बोलते हैं ना क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, पुराने ख्यालात के. और ये जो पहले दो है इनको नियो क्लासिकल बोलेंगे, जो 200 साल पुराने हैं. 1890 मार्शल को, लायनल रॉबिन्स को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं और इनको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बोलते हैं. सो ये 5 हिस्ट्री है जैसे ग्रो हुआ. पहले टैक्स का था, फिर संपत्ति होनी चाहिए देश के पास, फिर ह्यूमन वेलफेयर, फिर आदमी कमी कैसे पूरी करने की कोशिश करता है, और फिर ग्रोथ इंसान का और देश का. हिस्ट्री समझ में आया सबको? यस और नो? Yes, sir. So here we finish the history of economics.